Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. In the previous video, we discussed about the structure of nucleotide and nucleoside and what is the genetic material, what are the characteristics of a genetic material. That all we discussed in the previous video. Now let's start the structure of DNA. So our today's topic is structure of DNA. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएनए. डीएनए का डायग्राम हमने बनाया हुआ है. डीएनए दैट इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर, इज डबल हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसमें टू हेलिक्स होते हैं एंड दीज आर दिस इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए इज अ deoxyribonucleotide. डीएनए इज polydeoxyribonucleotide. तो अगर हम बात करते हैं इट्स अ polydeoxyribonucleotide, है ना. बहुत बड़ा नाम हो गया है तो सोचते ही लगता है कि इतना बड़ा what does it mean polydeoxyribonucleotide. Deoxyribo क्योंकि sugar that is present into the DNA is the deoxyribose sugar. तो ये जो word deoxyribo आया ये आया है वही शुगर से, राइबो deoxyribose sugar की वजह से. And nucleotides are there and they are many in number. Many nucleotides join together to make a DNA structure. That's why it is known as polydeoxyribonucleotide. अब nucleotide के बारे में जब हमने बात की थी then we know that the nucleotide, that word nucleotide, this word was given by or that was discovered by the scientist that is Friedrich Michel. Friedrich Michel the nucleotide and he discovered the nucleotide into the first cell, but he gave the name nuclein. उन्होंने नाम दिया था nuclein, but later on by the Altman was the scientist who gave the term nucleic acid for this DNA or RNA. nucleic acid जो word था, जो term था, that was given by the Altman. तो ये थी थोड़ी सी डिस्कवरी से रिलेटेड बात. नाउ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, the structure which is present into the DNA, it has a pentose sugar. अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, in the nucleotide the sugar that is present is the pentose sugar and it has nitrogenous base and it has phosphoric acid. These are the three important components which are present into the nucleotide. हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, here we are discussing the DNA. So it has also the same components for pentose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid. So this is the first thing, that is the pentose sugar. ये pentose sugar है which has the 5 carbon, carbon number 1, carbon number 2, 3, 4 and the 5th carbon is present into the form of an arm. एक arm की form में present है 5th carbon. So this is the 5 carbon pentose sugar. In this 5 carbon pentose sugar at the first carbon पे nitrogenous base attached होते हैं. This is the nitrogenous base which get attached at the first position. This nitrogenous base could be either purine or pyrimidine. किसी भी तरीके का नाइट्रोजनस बेस हो सकता है. यहाँ प्यूरीन हो सकते हैं नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे pyrimidine भी हो सकते हैं, pyrimidines. It could be purine और pyrimidine, दोनों तरीके की नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे मिल सकते हैं. प्यूरीन की अगर हम बात करें, the adenine और guanine, these are the purine which are joined by this first carbon of the pentose sugar from its 9th position. ये हमने पढ़ा है, that we already discussed in our previous video. The purine, adenine or guanine, they join with this pentose sugar from its 9th position, whereas the pyrimidines like cytosine, thymine, uracil, these join with the pentose sugar from its first position. तो ये first position से join हो जाएंगे. And the bond which forms between this the nitrogenous base and between the sugar, pentose sugar, it's glycosidic bond. ये जो bond होगा that is glycosidic bond. यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से इनका आपस में जॉइनिंग हो रही है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होंगे. ये बात हो गई पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द थर्ड कार्बन एंड द सेकंड एंड द थर्ड कार्बन. अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है. At the second position, it has hydrogen and
position it has free hydroxyl group. This functional hydroxyl group is make it reactive. ये reactive functional hydroxyl group है जो कि third carbon पे present होता है DNA के. Whereas at the fifth carbon, यहाँ पे जो fifth carbon होगा CH2OH, this is the fifth carbon. And this fifth carbon make a bond with the phosphoric acid. So phosphoric acid जो है it will join by this fifth carbon. And the bond which is forming between this phosphoric acid and the fifth carbon of the pentose sugar is phosphodiester bond. This is phosphodiester bond. So this is about the basic structure जो हमने बात की है. ये न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमने देखी है. अब इस तरीके की न्यूक्लियोटाइड जब एक के बाद एक नंबर में अरेंज होते जाएंगे, join होते जाएंगे, then the structure form which is known as polynucleotide structure. And in the case of DNA, we are calling it polydeoxyribonucleotide structure because deoxyribose sugar is present here. And how this joining is happen? कैसे nucleotide join होंगे? We know that here the two possibilities are there, two free positions are there by which the nucleotides can join. Here that third carbon has a functional OH group, whereas here the phosphoric acid, this fifth carbon is also free. फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है इसके साथ भी तो OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी फ्री है. तो फिफ्थ कार्बन position is there where the another nucleotide can bind, and this third carbon, ये जो third carbon का functional OH group है, it will form a bond with the another nucleotide. ये दूसरे nucleotide के साथ एक bonding form करेगा so that it can make a polynucleotide structure. So we will discuss about this complete structure of the DNA, this internal structure of the DNA, that how these nucleotides join with each other. हम इस सब के बारे में बात करेंगे, but after that we will discuss about this double helical structure also. तो पहले हम एक बार internal structure देखते हैं, then we discuss this double helical structure. But before discussing the structure of the DNA, we should know that DNA, that is the main genetic material of any organism. बहुत important genetic material होता है जो कि duplication की power रखता है. It can be equally divided into the two daughter cells which are formed, and it can be transmitted from one generation to another generation. Genetic information को transmit करने का काम कर रहा है. तो ये कुछ important characteristics है. Length of DNA की अगर हम बात करते हैं, the length of DNA is very important. Length of DNA is measured or considered as the number of nucleotides. How many nucleotides are present there, and how many nucleotides are making pair with each other is considered as the length of a DNA. तो अगर हम length of DNA की बात करेंगे कि कितना length हो सकती है DNA की, length of DNA is number of nucleotide, or we can say that it's a pair of nucleotide. याद रखकर हम बोल सकते हैं pair of nucleotides that are present in a DNA. This pair of nucleotide is also given a specific term. यहाँ पे इस pair of nucleotide के लिए भी हम एक specific term use करते हैं, that is known as base pair. So we can call it that the number of nucleotides, the length of the DNA is considered by or shown by the base pair. That how many base pairs are present, कितने base pair present है, उसके basis पे हम बता सकते हैं कि DNA की length क्या होगी. Suppose if we take an example, अगर हम example लेके explain करने की कोशिश करें, like in the case of E. coli, Escherichia coli, that is the bacteria which is very important as a genetic experiment. E. coli में अगर DNA की length की अगर हम बात करते हैं, it has 4.6 into 10⁻⁶ base pair. This is the length of the DNA of E. coli. Whereas in the case of the human being, अगर हम human being के case में DNA की length के बारे में बात करें, human being के अंदर जो DNA की length होती है, this is the 6.6 into 10⁹ base pair into the diploid condition. और haploid होगा तो 3.3 into 10⁹ base pair. So this is about the length of the DNA. Length of the DNA is considered as the pairs of nucleotide. Pair of nucleotide की form में हम consider करते हैं किसी भी DNA की length को. And this pair of nucleotides are also known as base pair. That is very important term क्योंकि बहुत important होगा, बहुत सारे exams में पूछा जाता है that
बेस पेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम बेस पेयर किसे बोल रहे हैं. वी आर कॉलिंग बेस पेयर द पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर दैट शोज द लेंथ ऑफ द डीएनए. ये बात हो गई डीएनए की लेंथ के बारे में और initially the structure of nucleotide, that how they form. Now let's discuss the complete structure of the DNA or internal structure of the DNA, that how these nucleotides join with one another to make our DNA. Now let's see the structure of DNA or internal structure of DNA. In the internal structure of the DNA, then one nucleotide join with the another nucleotide. This is the one sugar and the nitrogenous base is attached at the first position. Here the OH group is present and here at the fifth position the phosphoric acid is attached. This is the one nucleic acid or nucleotide, sorry, first nucleotide. This is the another nucleotide. Here 5 carbon into sugar, then nitrogenous base is also there, OH, and here this fifth, at the fifth carbon the phosphate group. Now let's see how these nucleotides arrange. To make a one strand of the DNA, two nucleotides join together by making a bond, and this bond is known as 3-5' phosphodiester bond, a 3'5' phosphodiester bond. Because हमने ये word क्यों use किया है here, that this OH, this functional OH which is present at the third carbon of the pentose sugar, ये pentose sugar का third carbon है, and this phosphoric acid is attached at the fifth carbon of the pentose sugar. Both of these two make a bond. Both of these two make a bond between each other, and by this bond they join. And this bond is also phosphodiester bond. ये भी एक phosphodiester bond है. And this phosphodiester is 3,5 phosphodiester bond. 3,5 because the third carbon OH is making a bond with the fifth carbon attached phosphoric acid. Fifth carbon पे attached phosphoric acid के साथ या phosphate के साथ एक bond बना रहा है. That's why it is known as 3,5 phosphodiester bond. So in this way, the two nucleotides get attached. Nucleotides आपस में attach हो जाएंगे, and it will make a long strand, long single strand. इस तरीके से एक long single strand बन जाएगा. We will make one more also. एक और हम यहाँ पे draw कर देते हैं. One more is there. Nitrogenous base is there, and here the phosphate, and it is also making a bond. Let's show this bond with some another color. Okay, and free OH group. Okay, in this way you can see that when the nucleotide joins with each other, जब nucleotide इस तरीके से एक के साथ एक join हो रहे हैं, then they have free ends. उनके free ends होंगे. Like at the one end the phosphoric acid is free. This is the 5 end, 5 carbon is free. Whereas at the another end the third carbon is free. Third carbon OH group is free to bind with another nucleotide. तो यहाँ पे इनके two free ends हमें देखने को मिल रहे हैं एक single strand के अंदर. And these single free ends are shown by, or they show the polarity of the DNA. So at this end where the 5 carbon is free and it can bind the another nucleotide, this is known as 5' end. इसे हम बोलेंगे 5' end. Whereas the another end where the third carbon join OH group, functional OH is in the free position, इसे हम बोलेंगे 3' end. So these are the two ends of the DNA, 5' end and 3' end. 5' end वो end है जहाँ पे free fifth carbon free या fifth carbon बोल सकते हैं कि जो phosphoric acid है that is the free to bind with the another nucleotide. Whereas at the third prime और 3' जो end है वहाँ पे free hydroxyl group है to make the bond with another nucleotide. So this is about the one strand of the DNA. ये one strand हो गया. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि two strands हैं जो कि आपस में join है parallelly. Here we draw the structure of the single strand. Now let's see how this strand is joined with the another strand. अब कैसे ये strand एक दूसरे strand के साथ join होता है? By DNA की जो structure है, DNA का जो model है, that is given by the Francis and Crick.
that we will discuss about in detail. Francis Crick ने जो double helical model दिया DNA का, according to this model, the two strands of the DNA join with each other in anti-parallel form. Anti-parallel form में attach होंगे. Anti-parallel का मतलब क्या है? ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि दोनों एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, बट दे आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल वे. मींस जहां पे एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है, वहीं पे दूसरे स्ट्रैंड का उसके सामने, उसके जस्ट सामने 3 प्राइम एंड होगा. दैट इज द एंटी पैरेलल. Whereas the strand at which the 3 prime of the first strand is there, एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम फ्री एंड है, 3 प्राइम OH यहाँ पे फ्री है, उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होगा. दैट इज नोन एज एंटी पैरेलल अरेंजमेंट. तो देखते हैं इस एंटी पैरेलल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कैसे डीएनए का सेकंड जो स्ट्रैंड है वो ज्वाइन हुआ है. तो अब हम बनाएंगे यही सेम शुगर का डायग्राम. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज जॉइंड. This is the same pentose sugar we have drawn here, and this is the first carbon of the pentose sugar where the nitrogenous base is attached. This is the second carbon, and this one is the third carbon where the free OH group is present. Third carbon जहाँ पे free OH present है, and this is the fifth carbon where the phosphoric acid is joined. This is the one nucleotide. Where is the another nucleotide? अगर हम another nucleotide की बात करेंगे, that is also present here but in anti-parallel way. ये भी anti-parallel way में हम join करवा रहे हैं. Here the nitrogenous base is present. यहाँ पे nitrogenous base present होगा. 2 prime. This second carbon is here. Third carbon which has the OH, it is here, and this is the fourth carbon where the phosphoric acid is joined. अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे bonding हो रही है. In this also, this OH is making phosphodiester bond with the phosphoric acid of the previous nucleotide. One nucleotide is making bond with the third position functional group OH जो present है third position पे. हम इसकी भी numbering कर देते हैं ताकि confusion ना हो. This is the first carbon, second, third, fourth, and this one is the fifth carbon. इस तरीके से इनकी arrangement हम दिखा सकते हैं. यहाँ पे third carbon का OH ने पिछले प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाया है. दैट इन द सेम वे जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. दैट इज आल्सो द 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. लेट्स ड्रॉ वन मोर न्यूक्लियोटाइड. एक और न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड. फर्स्ट कार्बन वेयर द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड. सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन वेयर द OH is present, and the fifth carbon where the phosphoric acid is present, and they are making again the phosphodiester bond between phosphoric acid, fifth carbon, and the third carbon. 3,5 phosphodiester bond is there. So this is the way in which the two strands of the DNA are arranged. One strand is anti-parallel to the another strand. It's in this strand. अब देखो बड़े ये बहुत important चीज है. polarity जो है डीएनए की वो तभी समझ में आएगी जब आप ये कंसेप्ट समझ पाओगे कि क्यों हमने ये नाम दिए हैं. हमने यहाँ पे स्ट्रैंड को 5 प्राइम लिखा है. 5 प्राइम क्यों लिखा है? बिकॉज इट हैज फिफ्थ कार्बन इज द फ्री हियर. यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री है जो कि बॉन्डिंग कर सकता है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ. Whereas at another end where the third carbon is free, third carbon पे जो OH join है that is the free to bind with the another nucleotide. That's why we are calling it 3 prime. This is the 3 prime and this is the 5 prime. But the another strand of the DNA is arranging in such a way that it is making the anti-parallel position. Anti-parallel position में arrange होगा. यहाँ पे इस स्ट्रैंड का इसका 5 प्राइम था तो सेकंड स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड इसके सामने आएगा जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है. Because this OH is present at the third carbon. तो third carbon पे जो OH free है, it is showing the free functional group which can be bind with the another nucleotide. It can make a bond with another nucleotide. तो यहाँ पे इसका 3 prime and free है. Third carbon is available to make a bond, and at this end the fifth carbon is available to make bond. तो इसे हमने बोल दिया 5 prime. So this is showing the anti-parallel arrangement. 5 prime is in front of the 3 prime of another strand. The 3 prime of one strand is in front of 5 prime of another strand. This arrangement is known as anti-parallel arrangement. So two strands हैं and these two strands are making
arranging in such a way that they are anti-parallel with each other, जो anti-parallel हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, these nucleotides, in these nucleotides, this pentose sugar and the phosphoric acid, two things, हम दो चीजों का मैंने नाम लिया है, this pentose sugar and this phosphoric acid, they are making the backbone of the DNA. Pentose sugar and phosphoric acid, they are making backbone of the DNA, whereas the nitrogenous bases are means ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, ये बैकबोन नहीं बना रहे, they are arranging outside, ये बाहर की तरफ arranged हैं, and these nitrogenous base which are arranged outside, they make bond with the another strand of the DNA. ये एक स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एंड जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, these bonds are the hydrogen bond, these bonds are the hydrogen bond, तो इन्हें हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कितने बॉन्ड होंगे, इट डिपेंड्स ऑन टू द नाइट्रोजन बेस कि कौन सा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच है। एडेनिन एंड थाइमिन, दे जॉइन टुगेदर, one purine is always make a bond with the pyrimidine, one purine always make bond with pyrimidine, so adenine and guanine, these are the purine, whereas cytosine, thymine and uracil, these are the pyrimidines। out of these two pyrimidine purine तो दो ही है, adenine है और guanine है, purine तो दो ही है, adenine and guanine, तो ये दोनों ही purine DNA में प्रेजेंट होती हैं, जबकि pyrimidine जो कि 3 है, cytosine, thymine and uracil, इनमें से 2 pyrimidine प्रेजेंट है, cytosine and thymine, these are present into the DNA। They arrange in such a way that adenine always make bond with the thymine, always make bond with thymine, whereas the guanine, this is the purine, it make bond with the pyrimidine cytosine। guanine हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, and these bonds are the hydrogen bond। But here the important thing is there that hydrogen bond which is present between adenine and thymine is 2 in number। अगर यहाँ पे एक एडेनिन है और यहाँ पे एक थाइमिन है, then they will make the 2 hydrogen bond, they will make 2 hydrogen bond, whereas the guanine and cytosine they make 3 hydrogen bond। यहाँ पे ये बनाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, they will join with each other by making the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं एडेनिन एंड यहाँ हम थाइमिन दिखा देंगे एंड यहाँ हम एडेनिन दिखा देंगे। So this is about the structure of the DNA that which is here। This is about this internal structure of the hair। Here we explain। Now the important thing that we should keep remember that this structure, the pentose sugar and the phosphoric acid, they are making the backbone बना रहे हैं, whereas the nitrogenous base they are coming out, बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस backbone से, and these nitrogenous base of the one strand they make hydrogen bond with the nitrogen base of the another strand, and these two strands are arranged in such a way that they are anti-parallel with each other। एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड या 5 प्राइम एंड दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के सामने होगा। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम एंटी पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। एक बैकबोन बन रही है, बैकबोन में दोनों स्ट्रैंड्स की नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड्स बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दैट इज फॉर्मिंग बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द पेंटोज शुगर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन the phosphoric acid and the OH, या फिर phosphoric acid और फिर कार्बन के साथ भी यहाँ पे फॉर्म बना हो रहा है that is phosphodiester bond, and the hydrogen bonds are also present between the nitrogen base। तो ये बात हुई इंटरनल स्ट्रक्चर डीएनए की। अब हम बात करेंगे this double helical model of the DNA। This double helical model of the DNA was given by the Watson and Crick। So let's discuss this double helical model in detail।